So hello everyone, this is Akshay here and welcome back to the undergrad DFA GFG beauty streak of day 293. So today's question we're gonna cover is about the arrays and I will add this question in the arrays playlist as well. So it's a hard category question and it's actually a good question. The question name is next smallest palindrome. But before starting ahead, if you're on the channel, please like, share and subscribe and hit the bell icon to get the regular updates. And ठीक है यार, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें करेंगे अपन. तो आज हमारा डे 2 था यार मेरी कम्युनिटी ट्रिप का एंड वी डिड सेवरल थिंग्स टुडे. तो सबसे पहले तो कल जो होटल चेक इन हमने किया था वहाँ से अपन मैसूर पैलेस गए and then we have a very beautiful palace, the Lalita Palace, if I'm naming the correct one. तो वो एक पैलेस है यार जिसमें I think they have made converted that palace into a restaurant. तो वहाँ हमारा बुफे लंच था एंड इट वाज लाइक वेरी ग्रेट राइट. तो मैं इसको अपने इंस्टाग्राम एंड आई विल मेक डेफिनेटली द यूट्यूब शॉर्ट्स ऑन इट एंड विल अपडेट इन माय चैनल एज वेल. आप वहाँ भी देख सकते हो. एंड देन फाइनली वी वेंट टू दिस प्लेस. This is the resort. Let me get you the name. What's the name? Yeah, so the resort name is like Mukkanana and it is like शक्लेशपुरा में है यार ये. और मैं अभी एक्चुअली मैं अपने एक रूम में बैठा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे एक वन डूम दिया है एक्चुअली. So there you can see the lights and everything. Here's the display and I'm making the video for you guys. So that's the bed here if you can just see. That's the bed. Yep. And yes, everything is there. I will definitely make a shorts on it. So let's not waste more time ahead here and let us quickly finish this question now. Okay, so the given a number n in the form of array num of size n containing form 1 to 9 inclusive. So the task is to find the next smallest palindrome strictly larger than the given number. राइट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम. ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है उसमें 1 से 9 तक इंक्लूसिव के नंबर दे रखे हैं. हमें एक ऐसा पैलिंड्रोम निकालना है जो इस पर्टिकुलर नंबर से तो बड़ा होना चाहिए बट दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट इन ऑल पॉसिबल आंसर्स. ठीक है, अब ये जो नंबर है इससे लार्जर नंबर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं राइट. और बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं कि सारे पैलिंड्रोम हों लार्जर देन दिस नंबर, बट हमें उनमें से स्मॉलेस्ट निकालना है. ठीक है, तो पहला टेस्ट केस तो नहीं, दूसरा टेस्ट केस देखो आप. 2 3 5 4 5. ठीक है, क्योंकि हमें इसे जस्ट बड़ा चाहिए और स्मॉलेस्ट भी चाहिए बाकी पॉसिबल आंसर्स में राइट. तो इसलिए इन्होंने शुरुआत के डिजिट चेंज नहीं किए. देखो 2 3 राइट एंड व्हेनेवर दे गेट अ बिगर नंबर उसको फ्लिप कर दिया, 6 बना दिया एंड देन अगेन रिपीट द 3 2 राइट. तो मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली. ठीक है, आप इसको सुनना समझने की कोशिश करना. ठीक है, so let's say I will just take the random numbers now. I've written each and every test case in my copy. Let's just try run it. And yep, video is recording. Yep. So let's just listen to it. Okay. So I am saying that let's say we have an even case, right, where the numbers given are 9, 8, 3, 4, 4, 2, 6, 9, right? And the indexes would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What I'm saying is divide this number into half, right? After dividing it to half, you need to start from here, right? And you keep on checking if this particular number is इसके जस्ट पीछे वाला नंबर से मैच करता है कि नहीं राइट. क्योंकि पैलिंड्रोम की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स से 9 8 एंड 9, हाउ वी कैन से दिस नंबर इज पैलिंड्रोम. हम ये देखते थे लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम है तो ठीक है. एंड देन अगेन बीच में चेक करते थे, लेट्स से 9 8 8 9, देन अगेन फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट इज सेम, तो मैं कहता था पैलिंड्रोम है राइट. सो दैट इज व्हाट विल कीप ऑन डूइंग. वी विल डिवाइड इट इन द मिडिल ऑफ द एंटायर नंबर एंड देन विल प्रोसीड इट. तो मैं 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मे बी 4 to 5. आप ध्यान से पेशेंटली सुनना, देन वी विल गो टू द कोड. ठीक है, ठीक है. So this 4 and 4 is matching, so my pointer will be here and then I will match with this number. So this is 2 and this is 3. तो मैं यहाँ पर हूँ यार राइट, मैं यहाँ पर. तो मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास कोई इंक्रीमेंटल केस है, इंक्रीमेंटल केस का मतलब ये है कि मैं जो राइट हैंड साइड में और मैं कहता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट राइट, ये जो नंबर्स है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है बिकॉज 9 जो है क्या 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 का वेट है इसके पास, और 2 क्या है सिर्फ लास्ट से थर्ड है तो यहाँ पे 10 पावर 2 का इसके पास वेट है राइट. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर्स हैं LSD है इफ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट. तो हमें मिडिल से स्प्लिट करना है और अपने LSD की तरफ बढ़ना है. ठीक है, तो मैं 2 को देखा और ये 3 राइट. तो मैं कहूंगा कि इट इज एज गुड एज सेइंग दैट इस 2 को अपन 3 में कन्वर्ट कर दें, 3 में कन्वर्ट कर दें राइट.
एंड अगर मैं अब नंबर लिखूं तो क्या हो जाएगा, दिस थिंग रिमेन एज इट इज 3 4 4 3। अब यहाँ पे जो 6 और 9 है हम अगेन इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 8 and 9। Now you can clearly see that this particular number is greater than my given number and it is the smallest among the possible answers. Correct? क्योंकि हमने क्या किया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ही फ्लिप किया या फिर उसे इंक्रीज किया है, राइट? तो इसे हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर है। और इसको पैलिंड्रोम बनने के लिए हमने क्या किया कि जहां पे हमें वायलेशन का पॉइंट मिल गया हमने उसको सही किया एंड देन वी जस्ट कॉपी पेस्टेड द एग्जैक्ट नंबर्स व्हिच वी हैव इन द राइट लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स इन द राइट, राइट? जो भी लेफ्ट में हमने उसको राइट में कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये तो हो गया हमारे पास इवन केस। ऑड केस में हम क्या कह सकते हैं, ऑड केस में लेट्स से हमारे पास नंबर है 9 8 3 4 5। let us take the same example 4 2 6 and 9, right? Again हम मिडिल में आएंगे and since this an odd on odd number of digits in this particular array, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो यहाँ पे प्लेस है इसको बस फ्लिप कर दो, 6 बना दो and your answer will be like 9 8 3 4 6 and just copy paste all the left digits in the right hand side, so it would be 4 3 8 and 9, right? So this would be your palindrome, right? So that's the first case. So this was the case I would name is as the incremental. This was the case of incremental case, right? जहां पे we were checking towards the left hand side and that was having a larger digit. अब हम एक केस डिस्कस करेंगे decremental case, ठीक है? So let's say we have a number now. So the first case we will again tackle the first even one, or let's say do the odd one first here this time, and we are taking the numbers 8 7 3 8 7 4 3, and then let's say we have 2 and then we have 3 5 9 and 8. So since it's an odd number of digits, so the middle element would be this one 2, right? तो हम इस केस में हम डायरेक्ट कहेंगे यार कि इसको इस 2 को बस आप 3 कर दो एंड जस्ट कॉपी पेस्ट द लेफ्ट डिजिट्स टुवर्ड्स द राइट, सो 8 7 4 3 और यहाँ पे मैं कह दूंगा इट इज अगेन 3 4 8 7 एंड दिस वुड बी, यू कैन सी दैट दिस इज माय लार्जेस्ट, strictly larger than my given array and it is the smallest among the possible answers. ठीक है, बट इवन के केस में क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? सो इवन का केस लेट्स से मैं लेता हूं, मैं क्या लूं 8 7 4 3, राइट? एंड लेट अस टेक 5 3 9 and 8। ठीक है, तो इसका मिडिल कुछ यहां पर होगा, राइट? मिडिल यहां होगा। सो वी विल सी, अगर हम ऐसा कर दें, let's say we are at this element and we just हमने विदाउट चेक किए जो हम कर रहे थे, अगर कोई भी नंबर आए उसे जस्ट मैच करा दें यहाँ पे, राइट? तो अगर हम मैच करा देते हैं, राइट, तो हमारे पास नंबर्स इस पर्टिकुलर केस के लिए आंसर क्या बनेगा 8 7 4 3। वापस से ये जो लेफ्ट के नंबर्स हैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूं मैं 4 8 4 7 8 to make it palindrome. You can clearly tell that this particular array now is a palindrome. We can definitely say this, but is it, ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो नया एरे आया वो स्ट्रिक्टली लार्जर है? ये लार्जर ही नहीं है यार। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वही फेल हो गई, सेकंड कंडीशन ट्रू है बट फर्स्ट कंडीशन ही फेल है, राइट? तो हम बिना कंपैरिजन के बस ब्लाइंडली अगर डिजिट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू दिस केस एज एन इंक्रीमेंटल केस। इंक्रीमेंटल है तभी ऐसा करो, डिक्रीमेंटल में काम नहीं करेगा। सो व्हाट वी कैन डू नाउ हियर इज दैट इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग from here to here, we will traverse from this point, right? We will start traversing from this point, correct? तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, right? So let me write the test case again, or let me write the test case again. So we have the numbers as 8 7 4 3 5 3 9 and 8, let's say, and that's the middle point, right? So what I'm saying is that I will come at this point and I will check that what's the value of 3, what's the say of my this particular digit. 1 second. और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं ब्लाइंडली यहाँ पे बस मैं इसको +1 कर दूंगा, इस पूरे को मैं +1 कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर 3 + 1 किया तो क्या हो जाएगा 4 and this remains 4 and this remains 7, this remains 8 and just copy paste the entire left numbers in the right hand side, so it will become 4 4 7 8. And you can see clearly that this would be strictly larger than a given number array and would be the smallest among the possible answers, right?
ओके तो ठीक है, हमने यार तीनों केसेस देख लिए। तो कौन से केसेस थे? इवन में हमने डिस्कस किया कैसे करना है हमें, राइट। हमने ऑड में डिस्कस कर लिया, एंड देन हमने इस ऑड में एंड देन इस इवन में डिस्कस कर लिया, राइट। द ओनली चेंज दैट वी नीड टू डू इज इन दिस even one. Okay, what has happened in this even one, right? एक और केस है यार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक और केस है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो डेफिनेटली, और ये सारे टेस्ट केसेस अपने कॉपी में आप लिख लो, करेक्ट। और एक और केस है क्या कि लेट्स से हमारे पास सारे के सारे 9999 हो गए, राइट। सो ईच एंड एवरी नंबर इज 999 है। तो अगेन इसको एरे में डिवाइड करूंगा, राइट, और मैं यहाँ से चेक करूंगा, ओके। तो फर्स्ट तो ये चेक होगा यार कि मैं इस पॉइंट पर आऊंगा और मैं देखूंगा कि ये जो नंबर है, कि ये जो नंबर है, इफ दिस इज स्मॉलर देन माई दिस नंबर, राइट। तो ऐसा है नहीं, राइट। तो इस केस से हमें बाहर निकल के हमें फिर क्या करना होगा, हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे इस पॉइंट से, राइट। और इसमें हम क्या कर देंगे, बस +1। अगर आप +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे कैरी ओवर 1 एंड दिस विल गिव यू एज 0 एंड देन अगेन 1 एंड देन finally your array will look like 99, right? And then you need to again copy paste the left number to the towards the right, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, this 9 will goes to 0 and this 9 will convert to 1, right? So it is as good to say that अगर आपके पास सारे 9 है, right? Let's say you have 4 9s, then what you need to do is you need to mention 1, then n minus 1 0 and then again 1. This will give you the answer, राइट। या तो आप इसको इस तरह से ऐसे हैंडल कर लो, और या तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेम चीज को इस केस में क्लब कर दो, राइट। इस केस में वेयर यू हैव द डिक्रीमेंटल केस ऑफ द इवन केस। ठीक है यार, अब हम इसके कोड को देखना शुरू करेंगे। कोड को देखने से पहले एक बार ड्राई रन हम इस पे कर लें, जो हमने बोला था इस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसके देखोगे, आप इसके मिडिल एलिमेंट पाओगे। इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा हो जाएगा यार? सो आई गेस which one would be the middle element? So overall it has n equals to 11, right? So 11 by 2 will give you as 5. So with the 5th index is pointing to which element? This one, right? This one. तो अगर मैं इस 7 पर आऊं, right, और मैं इसे कंपेयर करूं कि अगर ये छोटा है या नहीं, right? और I can just say that this 9 is the we have odd number of elements, right? तो इस 9 में हमें क्या करना है, हमें बस +1 कर देना है। आई होप यू रिमेंबर अ केस। अगर ऑड है हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें बस +1 कर देना है यहाँ पे, ये केस, राइट। वही हमने किया भी है, +1 किया तो 9 + 0 will give you 9 + 1 will give you as 0 and then 7 will have 1 carry over, this will give you as 8 and rest of the digits remain same and we copy the same left digits towards the right hand side to make it palindrome. So this would be strictly larger than a given number and would be the smallest among the possible answers. I hope we are very clear with all the cases. Now let me show you the code. Let me show you the code now. So there's a vector integer type, return type में दे रखा है, तो हमने भी एक वेक्टर आंसर बना लिया। We have declared some variables, ठीक है। अब देखो, तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला केस हमारा था कि now y we are starting from n by 2 to y less than n। इसका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका इसकी इंडेक्सेस क्या थी यार, 4, राइट। तो अगर 8 है, राइट, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 9, सो 9 by 2 इज नथिंग बट 4, so that is how we come at this point, this 4th index, right? And this is I, and I'm comparing with which one? I'm comparing it with n minus I minus 1. So n minus I minus 1 is nothing but 9 minus 4 minus 1, that is 9 minus 4 will give you as 5, 5 minus 4 will give you as, okay, 1 sec. ओके, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस गलत लिख दिया, तब ये प्रॉब्लम हो रहा है। 0 1 2 3 4, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 6 एंड दिस वुड बी 7, राइट। तो 8 नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे n इज नथिंग बट 8, सो 8 by 2 विल गिव यू एस 4, राइट। और यहाँ पे n माइनस आई माइनस 1 करेंगे तो 8 minus 4 minus 1 विल गिव यू एस 3, करेक्ट। हाँ, तो इस इंडेक्स को हम इससे कंपेयर कर रहे थे, राइट। सो दैट इज व्हाई वी आर कंपेयरिंग विद i, n minus I minus 1, right? Whenever we are saying that there is an incremental case, that is which element is greater, n minus I minus 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है, तो हम उसे स्वैप कर रहे हैं, राइट।
ठीक है, अगर ये है तो हम अपने e of I को उससे पुट कर दे रहे हैं एंड देन वी आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग ऑल द लेफ्ट एलिमेंट्स in the right hand side to make it palindrome. So that is what is this for loop is responsible. Now if that's the case, then definitely we have solved this problem. We need not to cover the rest of the cases, and that is why there is a flag variable solved, right? We have marked this variable as solved equals to 1 and then we just break it from here, right? And if that is not the case, then definitely this else if would be caught in the decremental case, that when you started to compare that n minus I minus 1 element is lesser than, right? So this will cover, except this case, it will cover all the cases, right? Except this case, everything will fall under the else if, right? Great. ठीक है, तो ये वाला केस जो है यार, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये अपने इफ से हो जाता एंड राइट, यहाँ से हम देखते हैं इफ सॉल्व इज इक्वल टू 1, देन डेफिनेटली जो हमारे नम में हमारे एरे ए में जो भी एलिमेंट्स हैं हम उसको आंसर में ऐड कर देते हैं, बोलते रिटर्न आंसर। ठीक है, एक बार आप कोड वॉक थ्रू बाकी केस के लिए देख लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास क्या केस था ये, राइट? सो व्हाट इज द इंडेक्स हियर? सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाता है, n इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास 9/2 विच विल गिव यू एस 4, राइट? एंड देन अगेन 9 माइनस I, दैट इज 4 - 1 विच विल गिव यू अगेन एस 4, राइट? तो हम फोर्थ इंडेक्स कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हमें लेसर देन इक्वालिटी की साइन तो नहीं आएगी क्योंकि वो एलिमेंट इक्वल है, राइट? सो इसलिए हमारे पास ये एल्स इफ केस में जाएगा एंड इट विल ब्रेक एंड विल सी दैट solved is not equal to 1, it is actually equals to 0. So what will happen, we will just add 1 here, we will just add +1 to this thing, right, to this thing, and we will then copy paste the entire left elements towards the right. So that's what is happening here, that is what is happening here. So this carry is just making sure, right, to handle all the 999 cases, right? And here we need to start from n-1/2. ठीक है, तो मैं आपको एक बार ड्राई रन आपको इससे दिखा देता हूँ. So let's say we have the indexes 0 1 2 3, right? So it will falls in the else if case. So n-1/2 would be nothing but n is nothing but 4 here, right? So 4 minus 1, that is give 3, 3 minus 2 will give you as 1. So I am at this point, right? I'm at this point, and then what's next is happening that I'm adding +1 first of all, and if it is equals to 10, then I will point it as 0. Right? So what is actually happening here is, so you have an array where A, which you have the elements like this. So I'm at this point, now I have added +1 to this, and it actually sums up given to as +10, right? So I will replace this thing as 0 and I will give carry 1. Then again I will add +1 here, and again it will goes to 10. So again I will replace with this 0, right? And now I have an answer vector where I will my first step would be to push this extra 1. I will just check if carry is equals to 1, I will push the extra 1 here. You can see in the code, if carry is equals to 1, we are pushing the first, and then we are pushing the entire elements of A, right? So in the answer you will have 1 0 0 9 and 9, right? Now what I need to do is that I need to flip it, right? I need to like make it palindrome, right? तो हम फर्स्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट को मैच कराएंगे, राइट? तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप लिखा है, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कैरीज अगेन इक्वल्स टू 1, तो डेफिनेटली हमारा जो n पहले जो 4 था, इसकी लेंथ क्या थी 4, बट नाउ वी हैव द आंसर, the number of digits in the answer as 5, so that is why n plus plus and n give you as 5, right? And what I have done, we have just run a simple for loop from n+1/2. So n+1/2 is nothing but 6/2, which is 3. If you name the indexes here, so it will be 0 1 2 3 4. So that is, we are starting at this point, right? And we are swapping with which index? N minus I minus 1. So this will be nothing but 5 minus 3 minus 1. So this will give you as 2. Correct? So definitely this 3 is getting swapped with the second index. So definitely हमें इसे ही किससे स्वैप करना था? 2 से स्वैप करना था यार, किससे करना था? Let me check, हमने क्या यूज किया यहाँ पे? n+1/2 है, राइट? मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन कर देता हूँ. n+1/2. So it was 5. I did 6. n+1, that is 6/2, and it gives me as 3, right? So 5 minus 3 minus 1 will give you as 1, not 2. ठीक है, मेरी मैथ्स यहाँ पे थोड़ी खराब हो गई, राइट? So 1.
तो थर्ड इंडेक्स को हम 1 से स्वैप करें, डेफिनेटली हम थर्ड इंडेक्स को 1 से ही स्वैप करेंगे टू मेक इट पैलिंड्रोम, वी कैन सी इट मैनुअली एज वेल, राइट। तो हम स्वैप नहीं करेंगे, एक्चुअली सेम करेंगे। तो ये 9 भी हमारा 0 हो गया, एंड देन अगेन वी विल कीप ऑन इटरेटिंग अंटिल वी रीच द एंड ऑफ द लूप। सो ये 9 जो है अब इस 1 से स्वैप होगा, स्वैप नहीं होगा, सेम होगा, एंड देन you have the final answer as 1 0 0 1, right? The same would be handled for rest of the cases which we have already discussed, and that's how this particular code is running. Well, let us compile and run. So I think it's 20 minutes and counting ahead. तो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन हो गया। लेट अस हिट द सबमिट बटन। सो व्हाइल इट इज सबमिटिंग, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? वी आर यूजिंग some multiple parallel for loop. So this for loop will give you the time complexity of O of n, right? So great, as you can see, all the test cases has been passed and we have scored. What happened here? One sec. So all the test cases have been passed and we have scored 8 points. So we have completed this day streak as well, right? Okay. Okay. Okay, and what is the time complexity? We are nothing. We are using some variables and we are using some parallel for loop. So this for loop O of n. Then again we are using one another for loop. So O of. Okay, so if this if case runs, right? If this if case runs, then what will happen? So it would be O of n, correct? Whenever we are finding a violation point, or let's say an incremental case, we are running a for loop for the rest of the elements present in the left to right से बराबर करने के लिए, right? So we are visiting each and every element just once, even though we have written 2 for loop and it may look like that we have used 2 nested for loop, but if you do the dry run, if you have understood it correctly, then you can realize, or you may relate to me, that we are visiting each and every element just once. So that is why O of n for the first even case of our incremental case, right? Even case of incremental case, yes. Okay, for rest of the cases we will go to the else if, and then again O of for loop will give you O of n, and that's it. Again this again parallel for loop, O of n. So the overall time complexity would be O of n. And what is the space complexity? We are not using any additional array, just few pointers, so it would be O of 1, right? Let us switch back to the C++ code now. The same code is written here. I will not give you the code walkthrough. I will just scroll it down for you so that you can just get help from here. Also, do not worry, you can get all the source code mentioned in my DSA repository. I will mention that link in the description. And let's just hit the submit button for this C++ code as well, so that it can automatically get pushed in my DSA repository. That's great. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, एंड आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यार, मैं फिर भी बट वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरे को भी हेल्प मिलता है। मैं नहीं बनाता तो मेरे को लगता है कुछ समथिंग आई हैव नॉट डन इन माय डे, एंड थोड़ा अधूरा लगता है, राइट? सो व्हाटएवर बी द सम सर्कमस्टेंसेस, इफ इट्स पॉसिबल, अगर थोड़ा सा भी पॉसिबल होता है तो आई मेक एन एफर्ट टू डू दिस, राइट? तो आप लोग भी करो, ठीक है? तो ओके गाइज, लेट्स मीट टुमारो, एंड यस आई विल पोस्ट यू, आई विल keep you update for the next round of what to say circumstances. ठीक है, मिलते हैं कल के पीरियड में। Till then keep learning, keep growing, bye and take care guys.